continuing heavy rains and landslides in the Himalayas. Another major landslide in Himachal Pradesh's Kullu district destroyed several houses. Multi-story buildings crumbled like a pack of cards, as you can see on your screens, and it was all caught on camera. Remember, we've been witnessing several such landslides in the past few weeks, and there is a fresh alert from the IMD warning of more rain in the state. Emergency response teams of the NDRF and the State Disaster Response Force have been deployed. Hundreds of vehicles are stranded on the Kullu Mandi highway after heavy rainfall, according to reports. A total of 709 roads have been closed, and the state government has estimated damage to public infrastructure of over 8,000 crores. Massive damages there. Three major spells, remember, of heavy rain have hit the state in the last few weeks. Shimla city suffered a huge damage in the last spell. The state government has announced an immediate stop to stone crushing on the banks of all river and rivulets to arrest the alarming impact on the ecosystem. A sudden measure, whether it's enough or not, is a matter of debate. A short while ago, we spoke with the Deputy Chief Minister of Himachal Pradesh, Mr. Mukesh Agnihotri. Sir, thank you very much for speaking with us. Give us a sense of the ground situation there. Abhi kya haal hai wahan? एक तो कल जो है और ये जो अब आनी की घटनाक्रम हुआ है, अब कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में घूम के फिर कुल्लू पहुंच गया मसला। फर्स्ट राउंड में भी कुल्लू में बहुत भारी तबाही हुई थी। अब कुल्लू के आनी में जो घटनाक्रम हुआ है, 8 बहुमंजिला बिल्डिंगें जो है ताश के पत्तों की तरह बिखर के भरभरा के नीचे गिर गई हैं, और ये आनी के बस अड्डे के बिल्कुल समीप है। हालांकि हमारे पथ परिवहन निगम की बहुत बसें वहां खड़ी हुई थी, वो सारी बच गई हैं, और इन बिल्डिंग्स को पहले ही खाली करवा लिया गया था, तो कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। और लेकिन ये भारी भरकम स्ट्रक्चर्स थे जो नीचे आए हैं। इसके नीचे 100 के आसपास दुकानें भी थी, लेकिन बचाव हो गया है और सब लोगों को राहत शिविरों में पहुंचा दिया गया है, जहां उनके लिए बंदोबस्त किए जा रहे हैं। लेकिन ये भी काफी बड़ा घटना, बहुत बड़ा हादसा ह्यूमन ट्रेजेडी के हिसाब से टल गया। You've been able to evacuate people out of those buildings in time, sir. Is this because of random construction? That's what is causing the problem there in the hills that we've seen repeatedly? नहीं, देखिए, अभी तक तो हम रिलीफ एंड रेस्टोरेशन के बीच में हैं। अभी जो फोकस है हमारा रिलीफ एंड रेस्टोरेशन पे ही चल रहा है, क्योंकि लगभग 15,000 लोग बेघर हो चुके हैं, जिनके घर उजड़ गए हैं, और लोगों को पार्शली डैमेज जो हाउसेज हैं वो अलग हैं। तो इसलिए इस समय हम इस बात पे नहीं जा रहे हैं कि हमें इस बात पे अभी क्या सबक लेना है। अभी तो हमें ये नजर आ रहा है कि ब्यास नदी ने तबाही मचाई है। सबसे ज्यादा जो है कुल्लू मनाली में भी ब्यास है, और इधर भी कांगड़ा में भी ब्यास है, हमीरपुर में भी ब्यास नदी है। तो सारा जो नुकसान हुआ है वो ब्यास बेल्ट में हुआ है। तो जैसे कल ही हमने ब्यास नदी के इर्द गिर्द जितने भी 4 जिले, खासतौर पे कुल्लू, मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर में सारे क्रशर बैन कर दिए गए हैं। जितने भी भारी भरकम, मैं अभी दौरे पे था फतेहपुर पे और इंदौरा के, जहां पे बहुत पोंग डैम की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, तो वहां पे भी हमने देखा कि भारी भरकम क्रशर काम कर रहे हैं। गगनचुंबी उन्होंने स्टोरेज कर रखी है, गाड़ियां लाद के जा रहे हैं एक दिन में। और जो ग्रीड है, जो लस्ट है माफिया की, वो बिल्कुल स्पष्ट नजर आती है। इसलिए पहला एक सख्त कदम उठाते हुए इन चारों जिलों में माइनिंग पूरी तरह बैन कर दी गई है। सर, एनी न्यू नॉर्म्स? रिकंस्ट्रक्शन में कुछ नए नॉर्म्स ला रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट? नहीं, नेचुरली एक बात तो बड़ा स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश जो है ये एक टूरिस्ट का अट्रैक्शन का सेंटर है। ये सिर्फ एक राज्य नहीं है, लेकिन देश दुनिया के सैलानी यहाँ पे आते हैं, और उस तरीके से बहुत भारी इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म का यहाँ पे बना है, होटल्स बने हैं।
और लेकिन अभी जो मेजर हम देखते हैं कि नीति में तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा बदलाव लाने की अब जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि हमने बांध बनाए हैं, उनके बहुत बड़े बड़े रेजर्वेयर्स बने हैं, यहाँ पे बिजली पैदा होती है, पानी आगे की स्टेट्स को मिलता है, कोई राजस्थान को मिल रहा है, कोई हरियाणा को मिल रहा है, कोई पंजाब को मिल रहा है। तो एक तो जो हमारे जो डैम्स बने हैं उनका द्वारा सोचने की जरूरत है। उसके बाद नेशनल हाईवेज जो बने हैं उनके बारे में भी सोचने की जरूरत है कि नेशनल हाईवे भी पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। जैसे कुल्लू से मनाली नेशनल हाईवे बिल्कुल नहीं रहा है, मंडी से मनाली तक बहुत बुरा हाल है, शिमला और कालका नेशनल हाईवे बहुत नष्ट हो गया है। तो ये डैम्स हो गए, नेशनल हाईवेज हो गए, नदियों के किनारे जो स्ट्रक्चर्स बने हैं उनका मसला है, या माइनिंग है वो एक मसला है, या जमीन की इस दफा लगातार बारिश होने की वजह से जो सैचुरेशन आई है उसकी वजह से पहाड़ियां ही दरक गई हैं। एक तो होता है कि कोई मकान डैमेज हो जाए, एक है कि पूरा का पूरा पहाड़ ही नीचे आ गया। तो बहुत जगह ऐसी हैं जहां पहाड़ नीचे आ गया और पूरा की पूरी लोकेलिटी ही डैमेज हो गई है। It's a very difficult situation, sir. Thank you for taking time out to speak to us. All the best for all the efforts that you're making there in terms of containing the situation there. Joining us now is also Nagraj Adve, author and climate change expert, as well as Professor Yashpal Sundriyal, both of them who've studied this issue very closely. Mr. Adve, first to you. We have very limited time on the show. Quickly, what do you think has led to this situation, and will we learn our lessons at least after this? So it's a combination of basically three factors: very intense rainfall, which is very likely connected to climate change, a warming ocean, and an El Nino. The second one is basically a very fragile ecological Himalayan ecosystem. And the third is the kind of human interference in that system, which are of different kinds, which include things like road widening, dams, urbanization, etc. Of these three factors, only the second is natural. The first, which is intense rainfall and the kind of human interference, is something that is completely, in a sense, human caused. And this is something that is only going to intensify going forward, both in terms of the intensity of rainfall. Okay. And it also seems to be the fact that we also need to interrogate deeper. Some of the factors that the official pointed out are correct, like dams and mining and so on, but I'm not sure whether there is sufficient interrogation of the material interests that underlie this kind of development that has exacerbated the situation in Himachal Pradesh and across Himalaya. And these include things like, for instance, tourism, for instance, urbanization, but also the way in which the car and the development of essentially the ownership of private car transport has expanded and intensified over the last 25 or 30 years. That enables a car driving elite to basically go for short holidays in the Himalayas. So there's a factor of them able to go, they go for shorter times, and it's linked to the spread of a tourism industry, which does provide a lot of employment there. But I think these are the kind of material factors that need to be interrogated deeper, I think, and need to be important points that you make there, Professor Yashpal. Will we learn our lessons? Because even now the push is for bigger roads, number of people buying property in the hills and building massive houses. Will we learn our lessons? And is this year much worse than any that you've seen before? Until and unless the government will not make proper policy for the development projects being implemented in the Himalaya, such type of the incident will occur more and more. So until and unless the government of India and the state government will not consider the recommendations of the scientists and technologists, then this problem cannot be solved. And one more thing, this intense rainfall is due to the climate change and global warming. This is very clear. And if you look which picture you are showing of the Himachal Pradesh, they all are the multi-story buildings. We don't have any building code for the Himalayan states. Who will make it? Nobody is going to see whether a person is constructing his house or his building or hotel or lodge according to the building code. Because we don't have any building code, and entire Himalaya
not only climatically, but tectonically is also highly sensitive. It falls Okay. under Important point zone that 4 and 5. Yeah, Yes. you know, important points that both of you raised there. Thank you very much for raising these points. As we see those pictures, hopefully we will learn some lessons. Both of you have detailed issues that we need to learn and evolve in the hill stations and in that ecosystem. Thank you too for joining us. Obviously those images bring about a disturbing reality of the present at the moment in the Himalayas. There, a Himalayan issue there that needs to be addressed. That's all we have time for on this show.